Okay, good afternoon, everybody. Welcome to day 26 of the Magic Book session. And just in case किसी को आज पीछे से disturbance आए, it's because I'm on the road, I'm traveling. तो maybe आवाज आ सकती है आप सबको पीछे से background noises, but I hope that's manageable. So today, because the time is also less, we'll just be reading the chapter in English today. So before we begin with the reading of today's chapter, अगर आप में से किसी की कोई sharing है या कोई doubt है कल के chapter से related, then you can unmute yourself and share or ask. Ma'am, I want to ask something that in yesterday's exercise we were supposed to pay our gratitude to seven things around us and from the cue of which we get from the universe. But I was able to find about 30 things in 4 minutes in my room only where I was sitting. So I paid my gratitude for that, and for the rest all day, I like listen to police sound. So I pay my gratitude for them for my security and for more things like this. So I continued it. So is it okay in that way? मतलब आपको minimum 7 करनी थी उसके बाद ऊपर आपको जितनी करनी उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है Oh, ठीक है सो मिनिमम इफ यू डिड 7 एंड उसके ऊपर अगर तुमने 100 भी करी 50 करी 10 करी सो दैट्स ओके इट्स बेटर इन फैक्ट okay, ma'am. Thank you, ओके ma'am. या थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल बाकियों ने जब कल अपनी एक्सरसाइज करी सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओके ठीक है so I think we can start with the reading of the chapter. Who would like to read today's chapter in English? आज हम बस English में पढ़ेंगे. Is that okay with everybody? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. ठीक है. Ma'am, may I? May I, ma'am? ठीक है एक काम करते हैं आज का चैप्टर 50-50 करेंगे फर्स्ट हाफ जानवी कैन रीड सेकंड हाफ प्रिया कैन रीड चलो ओके so day 26 magically transform mistakes into blessings. Janvi, you can start. Okay. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey. Every single mistake is a blessing. Indistinguish. Today's magical practice will prove it because you are A about. blessing in disguise. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will improve it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistake, and if we don't did not make them, we did never learn anything, and we would not grow any smarter or any wiser. Right. So, आज का chapter is all about turning your mistakes into your blessings. If you remember, जब day 17 का chapter था, which was magic check, तो उसमें आपको एक वीडियो दिखाई थी about Jim Carrey, जिसमें starting में Oprah Winfrey said a very beautiful thing कि आप कैसे how your bad experiences can be a good learning as experience learning experience for you to get yourself a better teacher या आपने कोई चीज 100% दिया कैन अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि अच्छा ठीक आपने मैंने ये चीज गड़बड़ी थी नेक्स्ट टाइम रिपीट करूंगी तो सेम ही मिलेंगे सो या किस किसने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है
reinvented the bulb now. Okay, sorry. What did you guys hear last? Hello? Am I audible? Yes, ma'am, now you're audible. Ma'am, the time when you started explaining it, from that time only your voice was cracking Okay, अच्छा, after it was some words. cracking from then only. ठीक है, so Yeah. do you guys remember day 17 का जो वीडियो दिखाया था जिम कैरी का, जब मैजिक चेक वाला चैप्टर था? तो उस वीडियो के स्टार्टिंग में ओपरा विंफ्रे ने कहा था कि आपके बैड एक्सपीरियंसेस हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं. इज माय वॉइस क्लियर नाउ? क्रैक तो नहीं कर रही है? No, ma'am, it's clear now. राइट. सो उसमें था कि सपोज लेट्स से यू हैव अ बैड टीचर, कोई टीचर है जो उतना अच्छा नहीं है, आपको नहीं लगता कि आपके लिए वो टीचर सूटेबल है. सो इट्स अ एक्सपीरियंस, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू टू गेट योरसेल्फ अ बेटर टीचर. या आप कोई टास्क कर रहे थे एंड आपने उसमें अच्छे से नहीं किया, या किसी ना किसी वजह से आप उस टास्क को सक्सेसफुली आप कंप्लीट नहीं कर पाए. सो इट वाज अगेन ये चीज नहीं करनी, यही आएगा कि आप उसको complete- so Ma'am, again your voice is cracking. Yes, ma'am. Okay, am I audible? Yes, ma'am. I'm so sorry about this internet connection today. Okay, just give me a minute. Yeah. So बाय वूंड्स इट मीन्स एनीथिंग, मतलब किसी भी टाइप की आपको चोट पहुंची हो, कैसी भी मिस्टेक हो, हर चीज़ से हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. अगर आपका हाथ आयरन, गरम आयरन पे लग गया, प्रेस पे लग गया, तो अब आपका हाथ जल गया है. अब आप अगर उससे कुछ सीखे ही नहीं हो तो फिर तो आप वापस गधे की तरह उसी आयरन पे आप अगर वापस हाथ लगाओगे तो आपको वापस ही जलना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी टाइप की गलती करते हो उससे सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर नहीं सीखोगे तो वो गलतियाँ आप खुद ही तब तक करते रहोगे जब तक आपको इतनी चोट ना पहुँच जाए कि फिर अब आप कहोगे कि यार शिट, अब तो आई कैन नॉट गो बैक फ्रॉम हियर. तो गलतियों से जितनी ज़्यादा जल्दी आप सीख लो उतना ज़्यादा बेटर होता है. सो जस्ट लाइक हम यहाँ पे, सो यू गर्ल्स आर स्टिल इन स्कूल. सो जैसे व्हेन व्हेन वी आर किड्स, तो उस टाइम पे अगर हम किसी भी टाइप की गलतियाँ करते हैं या जो भी करते हैं तो पीपल यूजुअली इग्नोर, लोग कहते हैं कि अरे जाने दो, बच्चा ही तो है, करने दो, शैतानी इस एज पे नहीं करेगा तो कब करेगा. बट जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मतलब क्लास 9 में आ गए, 10th में आ गए, 12 ये सब पे पहुँचते हैं, तो वैसे ही फिर उसके बाद व्हेन वी मेक मिस्टेक्स उस टाइम पे, तो हमें आस-पास वाले लोगों से भी सुनने को मिलता है ना कि यार इतने बड़े हो गए हो और अभी भी गलतियाँ कर रहे हो, मतलब ऐसा कैसे? एंड चलो दूसरों को तो छोड़ो, हम खुद अपने आप पे बहुत सारा प्रेशर लगाने लग जाते हैं कि यार अब ना तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब तुम ना ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकतें नहीं कर सकती, तुम इतनी छोटी-छोटी चीज़ें तुम्हें कैसे नहीं समझ आती है, और अपने पे ही हम खुद बहुत सारा प्रेशर लगाने लग जाते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है. हमें याद रखना पड़ेगा कि जैसे हम बच्चे थे और गलतियाँ करना वाज़ ओके एज़ लर्निंग फ्रॉम इट. तो सेम वे अगर आप बड़े भी हो तो आप अभी भी इंसान ही ना, तो हर एज में आप अलग-अलग टाइप की गलतियाँ करोगे, करते रहोगे, बिकॉज़ उससे भी हम सीखते हैं. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अब मिस्टेक करने से डरे नहीं, या अगर करते हैं तो ऐसे अब नहीं करते कि यार तुमने ऐसे कैसे कर दिया, हाउ डेयर यू मेक दिस मिस्टेक, इस टाइप की चीज़ें.
वो सब करना छोड़ना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यू। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistakes over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. Let's राइट। consider the ओके, वेट। सो यस, हम सबके पास फ्रीडम है टू मेक आवर ओन चॉइसेस, हमेशा से होती है हमारे पास ये फ्रीडम। सो इसका ये भी मतलब है कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपके चॉइसेस करेक्ट ही हो। रास्ते में ऑन द वे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, व्हिच इज़ ओके। एंड रीज़न ही यही है कि मिस्टेक्स इसलिए हर्ट करती है ताकि हम उससे कुछ सीखें। अगर सीखेंगे ही नहीं तो वो हर्ट ही नहीं करेंगी। एंड फिर हम बार-बार वही चीज़ करते रहेंगे। जस्ट लाइक मैंने अभी जो आयरन प्रेस वाला जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, कि एक बार हाथ जला, आप सीखे नहीं, आप वापस गए, वापस जला, आपको समझ नहीं आया कि अरे क्यों जला, या जो भी। तो आप बार-बार करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, तो फिर आप एक टाइम आएगा कि इतनी ज़्यादा स्किन जल जाएगी कि फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। सो पहले ही आप सीख जाते हो कि वहाँ तक की नौबत ही नहीं आती है। मेबी 1 बार में नहीं समझ आया, 2 बार में आ सकता है, 3 बार में तो डेफ़िनिटली आ जाएगा, राइट? सो इसीलिए आप जो भी गलतियाँ करते हो उससे सीखना इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन का नाम किस-किसने सुना है? जस्ट क्विकली राइट इट डाउन इन द चैट्स। ओके, ग्रेट। सो उन्होंने लाइट का इन्वेंशन किया था। बट उसके पहले जब उन्होंने सक्सेसफुली लाइट का इन्वेंशन किया था, उसके बाद उससे पहले वो कम से कम 1000 टाइम्स, 1000 बार वो फेल हुए थे। तो जब उनसे पूछा गया कि यार मतलब आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतनी बार फेल हो गया, मुझे गिव अप कर देना चाहिए या जो भी? तो उनका रिप्लाई कुछ ऐसा था कि नहीं, मुझे मतलब मैं कहीं पे भी डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने अपने हर एक एक्सपीरियंस से सीखा। एंड अब मुझे पता है कि वो 1000 तरीके जिससे अगर कोई भी ट्राई करे तो लाइट इन्वेंट नहीं होगी, और वो एक तरीका पता है जिसको करने से लाइट आप इन्वेंट कर सकते हो। सो ऐसे दूसरों का भी टाइम बचा, एंड उनकी गलतियों से उन्होंने तो सीखा ही है, बट अब वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक ऑल्सो। सो खुद की गलतियों से सीखना, दूसरों दूसरों की गलतियों से सीखना, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे पहला स्टेप होता है टू लर्न फ्रॉम एनी मिस्टेक इज टू फर्स्ट एडमिट कि हाँ यार मेरी गलती थी। और यहीं पे ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, यहीं पे वो मात खा जाते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते यार कि उनकी गलती भी थी। उल्टा दूसरों को, अगर आपको कोई आपकी गलती बता रहा है तो उस टाइम पे यूजुअली लोग क्या करते हैं कि दूसरे इंसान को उसकी गलतियाँ गिनाने लग जाते हैं कि तुमने भी तो ऐसे किया था, तुमने उस टाइम ऐसे बोला था, तुम ये, तुम वो, और फिर लड़ाइयाँ और बढ़ जाती है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि नहीं यार, हाँ, अभी जो प्रॉब्लम है उसमें मेरी गलती थी, या जो भी। ओके। let's consider the scenario of being pulled over by the police or for speeding or being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't They stand a had a radar gun, and so radar we did not stand a chance. chance. But the mistakes was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming others people for our mistake is that will still suffer the pain and consequences of our mistake. But we didn't learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again.
You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful thing about being humans. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How to do you learn from a mistake? Gratitude. राइट, No, ओके, यस। सो एक एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि इंडिया में अगर पुलिस आपको रोक देती है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम पुलिस वालों को ही उल्टा-सीधा बोलने लग जाते हैं कि अरे भैया जाने दो, या जो भी, या बाद में ये हो जाता है कि इनको तो बस क्या घूस खाने से मतलब है, या इनको बस पैसे दे दो, छोड़ देंगे, गलती तो मेरी थी नहीं बट इन्होंने ऐसे ही स्टॉप कर दिया। इनको ये पुलिस वाले करप्ट है, पुलिस मतलब जो भी ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, या पुलिस वालों से ही लड़ जाना कि जो भी, कि आपको पता नहीं है मेरे क्या पापा कौन है, या मेरे ये कनेक्शंस है। तो दुनिया भर की चीज़ें बता देते हैं इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग कि भाई हाँ, आप ज़्यादा स्पीड लिमिट से आप ऊपर चला रहे थे, तो इसलिए उन्होंने रोका है आपको। तो उस टाइम पे अपनी गलती एक्सेप्ट आप, यूजुअली आई हैवंट सीन अ लॉट ऑफ पीपल एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स उस टाइम पे। या अगर उस टाइम पे मतलब जैसे-तैसे करके पुलिस के डर के मारे उस टाइम बोल भी दिया, बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर फिर पुलिस वालों को गाली ज़रूर देते हैं, कि ये तो है ही ऐसे, एंड जो भी उनको आगे जो भी वर्ड्स यूज़ करने होते हैं अजीब। सो द प्रॉब्लम विद ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर अ मिस्टेक इज़ दैट जब हम दूसरों को अपने मिस्टेक्स के लिए जब हम ब्लेम करते हैं, तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं, कि एक तो आपने उससे कुछ सीखा नहीं, तो मतलब क्या है कि वापस आप वो मिस्टेक वापस करोगे, तो आपको वापस वो चीज़ हर्ट करेगी या कहीं न कहीं आपको बुरी लगेगी। सेकंड, you will continue to attract continue to attract more and more of those situations जहाँ पे आप और ज़्यादा ऐसे ही हर्ट होगे, और तब तक हर्ट होते रहोगे जब तक आप उससे सीखोगे नहीं। So you'll keep on attracting the same mistake over and over again till the time you don't learn from it. So हम सब इंसान हैं एंड गलतियाँ हर कोई करता है, which is also a very beautiful thing about being a human. So हर चीज़ परफेक्ट होती सो कितनी ज़्यादा बोरिंग हो जाती यार, कि अरे यार सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, एकदम स्मूथ, मतलब एडवेंचर ही चला जाता है यार लाइफ से, दैट्स व्हाट आई फील। सो मेकिंग मिस्टेक्स या लाइफ में जो हर्डल्स भी आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, कल चैलेंजेस के बारे में बात हो रही थी, सो उससे भी वी ऑल लर्न एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ लाइफ मोर थ्रिलिंग। बट दैट डजंट मीन कि अच्छा चलो वो तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वील टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम व्हेन द इंटरनेट इज बेटर। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग ह्यूमन, कि इतने जो चैलेंजेस आते हैं या जो आप गलतियाँ then this I do so many things also that one thing. Yeah, ma'am, your voice is not coming. Yes, ma'am. once again सबने लास्ट क्या सुना था? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, what did you all hear last? Ma'am, it was related to that if we don't make mistakes and we will not learn from it, then
there will be no thrill in our life. Yes. Yeah. So just like थॉमस अल्वा एडिसन जब वो लाइट का इन्वेंशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे अगर वो ही अपनी सेम मिस्टेक्स बार बार दोहराते इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट, तो सोचो आज तक फिर तो लाइट इन्वेंट ही नहीं हो पाती मे बी उनसे. बट ही लर्न फ्रॉम ईच ऑफ हिज इन्वेंशन. उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा, एंड अल्टीमेटली ही वाज एबल टू सक्सेसफुली इन्वेंट जो भी चीज वो इन्वेंट करना चाहते थे. सो हाउ डू यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक? It's through gratitude. So Ria, would you like to continue from here? Sure, ma'am. I would love to. Yeah, thank you. And thank you, Janvi. Thank you so much for nominating yourself to read the chapter in English. Ma'am, Okay. actually, I lost the paragraph. Can you please tell me that from where I have to continue? No Okay. matter how bad something may seem, Okay. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burnt. Maybe you told a white lie to protect someone and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a whole a lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What do I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that come out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on computer. Let's take the okay, right. So no matter how bad something may seem, there are always. So हमें कभी कभार लग सकता है कि यार मिस्टेक्स में या इस सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं है ग्रेटफुल होने के लिए, बट ऐसा हो ही नहीं सकता. बदतर से बदतर सिचुएशन में आपको चीजें मिल सकती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. यू जस्ट हैव टू बी विलिंग इनफ कि आप देखो उसमें वो ग्रेटफुल होने की चीजें. अगर आप खुद ही विलिंग नहीं हो तो आपको चाह के भी आपको नहीं दिखेगी. सो फर्स्टली द विलिंगनेस टू लर्न एंड एक्सेप्ट कि हाँ आपकी गलती है, एंड ये द विलिंगनेस टू फाइंड समथिंग गुड फ्रॉम दैट मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज आपको कोई एक ऐसी गलती चूज करनी है, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, बट अगर उस चीज को सोच के आपको अगर अभी भी हर्ट होता है, तो कोई आज बस एक ऐसी ब्लेसिंग यू हैव टू फाइंड. एंड सो इट कुड बी एनीथिंग. मे बी आपने अपने किसी क्लोज इंसान पे आपने आपने अपना टेम्पर खो दिया, तो आपने चीख चिल्ला दिया, उसको भला भला बुरा बोल दिया, या आपने किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने वाइट लाई बोल दिया, तो वो आप पे बैकफायर कर गई. या उसके वजह से कि आपने क्योंकि उसको बचाने के लिए आपने झूठ बोला था, तो आप कोई ऐसी सिचुएशन में आ गए जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो गई. या आपने कुछ लेट्स से आपने सोचा कि यार यहाँ पे ना मुझे ये चीज ज्यादा सस्ती मिल जाएगी, बट उसके चक्कर में सस्ते के चक्कर में आपको अल्टीमेटली ज्यादा पैसे पे करने पड़ गए. सो कुड बी एनीथिंग. या आपको लगा कि आप कोई राइट डिसीजन ले रहे हो,
बट अल्टीमेटली ऐसे पता चला कि नहीं यार ये तो बहुत ही गलत डिसीजन हो गया या ऑल दोस थिंग्स। सो कोई भी ऐसी चीज जो आपको अभी भी सोच के आपको लगता है कि शिट यार मुझे बहुत ही हर्ट होता है या बहुत ही बुरा लगता है अभी भी उसके बारे में सोचने में, कुछ ऐसी आपको आज मिस्टेक चूज करनी है। एंड देन वंस यू हैव आइडेंटिफाइड या आपको हो गया आपने चूज कर ली कोई एक मिस्टेक, उसके बाद आप यू कैन आस्क योर सेल्फ दीज टू क्वेश्चंस कि अच्छा अब आप ग्रैटिट्यूड आपको देना है ना अपने ब्लेसिंग्स, अगर आपको अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू यूज ग्रैटिट्यूड। सो फर्स्ट आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस कि अच्छा आपने जो गलती करी आपने उससे क्या सीखा या क्या क्या सीखा, एंड जो गलती से आपने जो सीखा अब उसमें से और क्या क्या अच्छी चीजें आई दैट केम आउट ऑफ दैट मिस्टेक। So, the most important thing to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. Yes, तो आप grateful कैसे हो सकते हो कि आपने उस mistake से क्या क्या चीज़ें सीखी। Let's say अगर मेरा आयरन रॉड पे हाथ जल गया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहला, to obviously not touch an iron rod जब वो गर्म हो। सेकंड कुड बी कि अब मैं और ज़्यादा केयरफुल रहूँगी कि मैं आई विल मेक श्योर कि जैसे ही उसका इस्तेमाल मैंने कर लिया है तो मैं स्विच बंद कर दूँ। एंड नाउ बिकॉज़ मेरा हाथ जला है तो मैं दूसरों को भी बचा सकती हूँ, मैं उनको बोल सकती हूँ कि ये चीज़ जब गर्म होती है तो उस पे डायरेक्ट हाथ मत लगाया करो, उससे आप जल सकते हो। सो मेनी थिंग्स आई लर्न फ्रॉम इट, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ। सो एंड नो मैटर व्हाट द मिस्टेक, हमेशा हर एक गलती से हर एक बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप कुछ अच्छा निकाल सकते हो क्योंकि हर एक चीज में अच्छी चीज होती है। एंड जब आप यही चीज करते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो, तो अगर आप गलतियां भी करोगे आप उसको भी अपने लाइफ में ऐसे ब्लेसिंग्स की तरह यूज कर सकते हो कि योर लाइफ विल ऑलवेज बी मैजिकल, कंटिन्यूसली बी मैजिकल। सो आपको आज जो भी आप मिस्टेक चूज करोगे उसमें आपको कम से कम 10 चीजें 10 चीजें ढूंढनी है टू बी ग्रेटफुल फॉर। मिनिमम 10 चीजें, अगर उससे ऊपर मिल गई तो फिर तो उससे बहुत अच्छी बात, मतलब उससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। बट ट्राई एंड लुक फॉर मिनिमम 10, उससे कम आपको नहीं करना है। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था अगर आपको कोई भी कंप्लेन को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना होता है, सो यू हैव टू लुक फॉर 10 ब्लेसिंग्स, आपको 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी होती है तभी जाके वो नेगेटिव सिचुएशन वापस से टर्न अराउंड होती है। सो सेम वे आज जो आप मिस्टेक चूज करोगे उसमें आपको कम से कम 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी होंगी, 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो दे हैव गिवन अनदर एग्जाम्पल, जब वही जब आप गाड़ी चला रहे थे एंड पुलिस ने आपको पकड़ लिया। सो लेट्स सी उसमें क्या क्या उन्होंने चीजें ढूंढी टू बी ग्रेटफुल फॉर। ओके। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number one, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Number two, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number three, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number four, I am grateful to the police officer for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number fifth, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number six, I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number seven, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number eight, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Number nine, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I'm grateful for I'm grateful to the police because all of the possible consequences that could have stopped me from my speeding
The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge to you take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? राइट। सो बस एक इंसिडेंट था कि वो बंदा स्पीड करके गाड़ी चला रहा था एंड पुलिस ने उसको रोक लिया। सो जस्ट वन मिस्टेक एंड खुद देखो कि उस मिस्टेक में से कितनी सारी ब्लेसिंग इस बंदे ने ढूंढ ली। सो मेनी थिंग्स कि ये स्पेशली दिस लास्ट पॉइंट कि कितने सारे और बुरे तरीके हो सकते थे जिसमें उसकी कार की जो भी स्पीड थी वो कम हो सकती थी। मे बी एक्सीडेंट हो जाता या कहीं पर ठुक जाती या किसी को वो ठोक देता। सो द पुलिस स्टॉपिंग दिस पर्सन फॉर स्पीडिंग वाज द लीस्ट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। सो ही कुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। या अगर जैसे आप नहीं चाहोगे कि कोई और ऐसे गंदे से गाड़ी चलाए तो आपको भी गुस्सा आता है ना कि यार ये कैसे गाड़ी चला रहा है, कितना बेवकूफ इंसान है। सो सेम वे नाउ यू ऑल्सो रियलाइज जैसे आप नहीं चाहते कि दूसरे ऐसे गाड़ी चलाए तो आपको भी इट्स लाइक अ गुड वेकअप कॉल कि थैंक गॉड पुलिस ने मुझे भी ऐसे रोक दिया। सो नाउ आई हैव रियलाइज कि हाँ ठीक है, जैसे अगर मैं दूसरों को कहता कि वो ऐसे काम करे तो मैं खुद भी ऐसे नहीं करना चाहिए। सो मेनी थिंग्स, वन मिस्टेक्स एंड इतनी सारी ब्लेसिंग उसने ढूंढी। सो यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू डू दिस प्रैक्टिस कि आज आपने एक मिस्टेक चूज करी, कल आप दूसरी कर लो, परसों दूसरी कर लो। सो एवरी डे यू कैन चूज वन मिस्टेक एंड टर्न इट इनटू अ ब्लेसिंग एंड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, कम से कम 10 ब्लेसिंग्स। एंड सोचो उससे अच्छी चीज लाइफ में और क्या गारंटी करते कि आप गलतियां भी कर रहे हो बट आप ब्लेसिंग्स भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक। अब इसका ये मतलब नहीं आप जानबूझ के गलती करो, फिर वो गलती नहीं होती, देन यू डिड दैट थिंग डेलिबरेटली। तो याद रखना कि ये जो एक्सरसाइजेज है इट्स देयर टू मेक योर लाइफ बेटर बट डोंट मिस यूज इट बिकॉज फिर यूनिवर्स को पता होता है आप किस इंटेंशन के साथ क्या क्या चीजें कर रहे हो। सो मेक योर अपने स्टेप्स, अपने डिसीजंस, मेक देम वाइजली एंड इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस इंटेंशन के साथ वो सारी चीजें कर रहे हो। सो आई होप टुडेस चैप्टर इज क्लियर टू एवरी, जस्ट क्विकली रीड द समरी एंड वी कैन एंड टुडे। Magic practice number 26. Magically transform. Should I continue, ma'am? Yes. Okay. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Choose one mistake you made in your life. Number 3. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good? Ma'am, please move one page. What are the good things that came out of the mistake? Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words: thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू। इज माय वॉइस ऑडिबल या क्रैक कर रही है? Ma'am, it's cracking a bit. ऑलराइट, ठीक है, बट इट्स मैनेजेबल राइट? Yes, it is, ma'am. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर टुडेज सेशन। क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग टुमारो, या अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे सो जस्ट लीव मी अ मैसेज एंड आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। Thank you so much, ma'am, for the session.
have any doubts, please leave me a message on WhatsApp today because I'm answering them all. And thank you so much for joining me for today's session and for being so cooperative and understanding. And yes, is the chapter clear to everybody, by the way? Yes, ma'am, it Yes. is clear. ठीक है. And just in case कुछ भी doubt होता है ना chapter से related, so I'll also share last month के chapter की same day की link with you guys. So if you want, you can go through that video as well. And yes, so before we end today's chapter, let's just take a few seconds to give our gratitude and then we can all move ahead with our day. All right. Okay, then have a good day, everybody, and I will see you all tomorrow at 3 p.m. or maybe earlier. I'll let you all know. Okay, thank you. Have a good Thank you so day. Bye much, ma'am. bye. Have a good Thank you, day. ma'am. Okay, thank you.